Hello everyone, welcome back to EduMust channel. Friends, today we are going to start with the 9th standard syllabus, that is lesson number 5, the fundamental unit of life, the cell. Okay, so what are we going to learn in this lesson? Let me just brief you about the cell. So here in this lesson we are going to learn about the discovery of the cell, who were the scientists that have taken part in finding what is there within the cell and their parts. Then we are going to learn, is the cell of the same size in all the living beings? Then we are going to learn about the major parts of the cell and what is present inside the cell and their functions. So let us begin today with the discovery of the cell. So here I have written the name of the scientist and what they have discovered in the cell. So first, the cell was discovered by the scientist Robert Hooke in the year 1665. He found that the bark of the tree, okay, it is made up of cell. First, he has taken the sample of the bark and he just saw in the microscope and he could see that the arrangement of the cells. How are the cells arrangement? And they were just looking similar to that of the arrangement of the bricks, how we see during the construction time. Okay, so here the cell actually it is coming from the Latin word which means little room. So cell का मतलब होता है little room, जो हम एक रूम में जैसे रहते हैं ना वैसे. So next scientist is Anton van Leeuwenhoek. Okay, so what did he found? After Robert Hooke, he found that cells were also present in the pond water. So he just collected the pond water and saw in the microscope and he could find the cells within them. देन सेल्स के बाद में आता है सेल्स के अंदर क्या होता है. तो सेल के अंदर बहुत से पार्ट्स होते हैं जिसके अलग अलग से फंक्शन होते हैं. तो यहाँ पे रॉबर्ट ब्राउन, ओके, व्हाट डिड ही फाउंड? ही फाउंड दैट द न्यूक्लियस, you know very well, the nucleus is called as a brain of the cell which controls the whole cell. So the Robert Brown found that nucleus is present in the cell. After that is J.E. Perkin J. He found that cell is also made up of protoplasm. तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं बाद में देखेंगे. Then here are two scientists, one is zoologist and one is botanist. He found that Jacob Mathis and Theodore Swan, they both found that animals and plants are made up of cells. Like they were able to completely read or study about the cell theory. Okay, तो complete डिस्कवरी करने लगे कि सेल क्या होता है, किधर पाया जाता है, सेल्स एनिमल्स में और प्लांट्स में कैसे डिफर होते हैं. देन here is one more scientist, R. Virchow, who came to know that, or he discovered that the cell has arisen from already the pre-existing cells. तो पहले ही सेल पहले ही मौजूद थे, तो उसके बाद में बहुत से लोगों ने उसके ऊपर डिस्कवरी किया, उसके पार्ट्स को फाइंड करने के बाद में वो क्या अपना रोल निभाते हैं सेल में ये फाइंड किया है. सो विल सी नेक्स्ट व्हाट आर द स्टिल मेजर पार्ट्स इन द सेल. नाउ वी शैल सी व्हाट आर द मेजर पार्ट्स ऑफ द सेल and what are again the within parts of those parts in the cell. So let me tell you, the cell is having three major parts, that is plasma membrane, nucleus and cytoplasm. Plasma membrane is the outermost part of the cell. Okay, like we are having skin, जैसे हमारा स्किन काम करता है वैसे ही ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी सेल्स में काम करता है. तो उसका क्या काम होता है, व्हाट इज इट्स फंक्शन, विल बी सीइंग लेटर ऑन. देन द नेक्स्ट इज न्यूक्लियस. एज आई टोल्ड यू, दैट इज द ब्रेन ऑफ द सेल. मेजर इसका जो फंक्शन होता है वो न्यूक्लियस में रहता है, क्या काम करता है और उसके पार्ट्स हम जस्ट ब्रीफ करेंगे. सो व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ दिस न्यूक्लियस इज न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, क्रोमोसोम्स एंड डीएनए. तो इसके स्पेसिफिकली फंक्शन क्या होते हैं, व्हाट डू दे एक्चुअली डू इन द न्यूक्लियस, we'll be seeing later on. Then here comes the major part, that is cytoplasm. तो साइटोप्लाज्म में उसके बहुत से पार्ट्स रहते हैं अंदर, जिसको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स.
ठीक है. लाइक हाउ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स, वैसे इनके भी डिफरेंट पार्ट्स रहते हैं. तो ईच एंड एवरी पार्ट इज हैविंग इट्स ओन स्पेसिफिक फंक्शन. सो your cytoplasm is having endoplasmic reticulum, it is having Golgi apparatus, lysosomes, mitochondria, plastids, chloroplast and vacuoles. So what are their major parts, what are they are going to function, whether the functions will be same in the plant cell and animal cell or it's going to be differ, we are going to see in the next video. So wait for my next video. Till that, have a great